हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ICSE क्लास 10th। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे कॉम्पिटेंसी सीरीज का। और इसके पहले हमने 29 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं और उन वीडियोस का लिंक नीचे दिया हुआ है, एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहां पे तुम्हें प्रीवियस सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। इनको डेफिनेटली करके जाना बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन दिस सीरीज सो फार is extremely competency focused, concept oriented and very important. So make sure you watch each and every question. साथ ही साथ मैं ये भी बोल दूं कि मेरा मशीन्स चैप्टर का पूरा एक वन शॉट भी किया हुआ है ऑलरेडी इस चैनल पर। अगर तुम्हें मशीन्स पर कोई भी डाउट है तो उस वन शॉट को देख लेना, तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा मशीन्स चैप्टर। उस चैप्टर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी सीरीज फ्रॉम मशीन्स चैप्टर। For a certain machine, the mechanical advantage MA is given by x plus 1. तो MA की वैल्यू दी हुई है x plus 1, x के टर्म्स में दिया हुआ है, and the velocity ratio is given by 2x minus 2. If the efficiency of the machine is 60%, find the value of x and hence determine the mechanical advantage and velocity ratio of the machine. देखो यहां पे हमें efficiency दी हुई है, MA और VR की वैल्यू x के टर्म्स में दी हुई है। तो हमें सोचना है कि इज देयर एनी फॉर्मूला, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, MA and VR? We know that there is a formula, very important formula, which says efficiency is equal to MA upon VR. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर न्यूमेरिकल्स हर साल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR। एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से लिखते हैं, इसे ईटा बोलते हैं। तो इसका यूज करेंगे। एफिशिएंसी गिवन है 60%। 60% मींस 0.6, isn't it? 60 upon 100, that is 0.6. MA की वैल्यू x अपॉन x प्लस 1, VR की वैल्यू 2x माइनस 2। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं तो ये 0.6 के साथ ये 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया। ऑन दिस साइड वी हैव x प्लस 1, so it will give you 1.2x minus 1.2 is equal to x plus 1. इसे हम सॉल्व करते हैं। 1.2x minus x, I am bringing the x from the left side to the right side and I am sending this 1 minus 1.2 on the other side, so 1 plus 1.2. So what will it give me? 0.2x is equal to 2.2. So x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 11 आ रही है। Are we getting x value is 11? Okay, so we had to find the value of x, which is 11. We have gotten that. Very simple. देखो हमें निकालना है, find the value of x. But साथ साथ we have to also determine MA and velocity ratio. But it's very easy now. So MA is x plus 1. So that means 11 plus 1, that is 12. And VR is 2x minus 2, that is 2 into 11 minus 2, that is 22 minus 2, that is 20. So we have got the values of MA, which is 12, VR, which is 20, and x, which is already 11. We have found it out. Okay, children, so this was the question. Very simple, yet an interesting question. Make sure to watch the other previous questions as well for this, which we have done in this series. And do subscribe to the channel and press the bell icon so that you do not miss out any of the important questions. Take care and keep studying.